The notices have been carefully considered by me. I have gone through each of the notices. In some of the notices, the procedural mistakes are outrageous. One was given yesterday at 3:10 p.m. This had happened earlier by the same honorable member. I have urged the honorable members, I am pleading with you again, this House has to set an example by observing meticulous, scrupulous adherence to the regime which we all have indicated for ourselves. If we depart from that rule, that I am sure will not send a good signal. I spent full time for the notice. The notice is required to be in line with my ruling, and my ruling was on twofold premise. One, the honorable member is required by mandate of the rule to spell out as to which rule the honorable member seeks to be suspended. And having done that, the honorable member is further obligated to indicate what is reflected in the proviso, that there is any other rule under which the honorable member can raise the issue. Since all the notices fall short of the requirement, I am constrained not to allow the notices. Take your seat. Honorable members, honorable, honorable, please take your seat. Please, sit down. Please, Mr. Manoj Jha, please take your seat. You are a professor. A professor has to exemplify conduct. Please, settle down. Mr. Tiwari, please settle down. Mr. Tiwari, please settle down. Please settle down. Please, Thakur Sahab, please, take your seat. Settle down. I'm on my legs. How are I to remind the honorable members? If the chairman is on legs, I am on legs. Mr. K.C. Venugopal, I am on legs. Please settle. Take your seat. Take your seat first, all of you. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Ranjan, take your seat. Honorable members, in this house, where I allow every member, and I can tell you, I neither look at this side nor at this side. All are equal before me. Please. Would you listen to me? Why are you impatient? Why are you impatient and aggressive? Honorable members, you take recourse to the legal regime to which
We all are subject. I am bound by it. I am to protect it. Avail of a mechanism. Think for yourself today. In last 20 years, 267 has been used, hardly in double digit. And every day, members give more than a dozen notices. Don't we realize the importance of suspension of the House? This will not be there. You will, honorable members, please, honorable members, honorable members, I appeal to you, and I appeal to you in the name of our Constitution. This is not a platform to settle issues in the manner you seek to settle. This is a solemn platform. This is a platform that can be used only in accordance with rules. I will not countenance any disregard of the rules. Only honorable leader of the opposition. Sir, confined to the issue I have addressed. Please. Sir, Help me run the House in accordance sir, with legal to help regime. you only, I request you, since beginning we are insisting for discussion on Chinese issue. On the border, they are already constructing bridges, Sir, make your roads, point. everything. We want to discuss. Sir, 1 minute. We want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed, Your point noted. houses are constructed, Please, okay. or other things. Anything? And Please. Honorable leader of the House. Honorable, Please. Please, bet. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. 1 second. Leader of the House, please sit down. Go to your seats. Take your seats. Please take your seats. Where have we got this culture? Please take your seat first. Speak from your seat. Go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat first. What are we doing? Where have we got this culture? Please go to your seat first. I will request the leader of the opposition to control his team and see that they are on the seats. Please go and take your seat first. Take your seat. Please take your seat first. Please take your seat. Which means, honorable members, what an outrageous scene. A member is saying, we will do it. Is it this time? Mr. K.C. Venugopal, you are bound by the rules. The chairman is on legs. Every member has to take a seat. Please take your seat. I urge the members with folded hands, please take your seat. No, you are not doing it. You are not doing it. Please take your seat. Take your seat first. No, sir, no. I can't allow this platform to be misused. Take your seat first. Take your seat. Ma'am, go to your seat. Please take your seat. Honorable members, please take your seat. I
Okay? Okay? Now take your seat. Please now take your seat. And let me tell you, let me, The last day of the session. The day one onwards, we are asking for a discussion on this. Actually, this is the last day of the session. I'll respond. Take your seat. Can we have discussion when members are not on their seat? What is that government hiding from this issue? Would you please take your seat first? What kind of example are we setting? The whole world is watching us. We are getting into a group. No, please take your seat. I request leader of the opposition. I urge leader of the opposition to persuade his members to take their seat, not to exhibit a conduct which is not consistent with parliamentary practice. Let them go to their seat. Sir, no, sir. Mr. Khadge, please take your seat. Let your members first go to their seats. I'll allow you once they go to their seats. Let each of your members go to the seats. Let each of the members go to their seat. Honorable members, I will make one request to you. You carefully see the video today and share it with your family members and friends, the kind of conduct you have exhibited. Ma'am, please, I get input from everyone. Mr. K.C. Venugopal, you are such a senior man. Mr. K.C. Venugopal, one second. Mr. K.C. Venugopal, you are such a senior man. Your voice matters hugely. If you get into aggression and not persuasion, it loses steam. Your greatest power is persuasion. I have enormous respect for every member of the House. 1 second, gentlemen. One second. Honorable members, I am happy to share with you one thing. The credentials, 1 second. The credentials of the members, 1 second. The credentials of the members, their experience, their background is unmatched. You will not find in any theater that kind of richness, that kind of depth, that kind of parliamentary experience. What bothers me is collectively we fail so miserably. I am here to make available platform for expression of thoughts, but that expression of thought can't be by making the same mistake every day. 267, I would urge the leader of the House to examine all the notices at his own level, and he will conclude unhesitatingly that my ruling of 8th December has been thoroughly disregarded. In compliance on everything, we are required to do our homework. We are parliamentarians. If we raise issue, we can raise issue in accordance. I urge the leader of the opposition to prevail upon his members to maintain decorum and discipline in the House so that we send a good, wholesome message. I will take up now Shri G.K. Vasan. Shri G.K. Vasan. Sir, I take this opportunity to raise an important Shri G.K. matter Vasan. with a heavy heart, sir. I am drawing the attention of the August House for the socially undesirable and life-threatening practice of manual scavenging. The fact that this practice is prevalent indicates that we have failed as a society to give awareness
to the public. And as parliamentarians, sir, we have not noticed to ensure that the laws governing manual scavenging passed by the parliament are implemented on the ground. Sir, scavenging of sewers, gutters and drains manually goes against the human dignity of the people. As persons belonging to only particular section are engaged in manual scavenging, they are socially stigmatized and discriminated. In addition, sir, to dehumanizing conditions, manual scavengers also face the threat of life-threatening disease. Since they are not provided proper gear, they are subjected to poisonous gas and other hazards, sir. Sir, I would say it is time for us to realize our duty towards these sections of our population to put up an end to this undesirable practice, to give them the benefits of health care, education and employment, and to ensure that they enjoy the rightful shares, progress in the Indian country, in the freedom, Indian modern India, sir. Sir, to conclude, I appeal to the government to enforce law strictly or bring in new law, powerful law, so that we put an end to this shameful practice once for all. Thank you, sir. Shri Samir Arun. Shri Samir Arun. सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झारखंड के एक ऐसे गंभीर जो घटना है, इस बात को आपके माध्यम से सदन में मैं रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, झारखंड के साहेबगंज जिला के बोरियो के गोंडा पहाड़ के एक आदिम जनजाति जो रूबिका पहाड़िया है, उसका ऊपर बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वहां का एक युवक जो दिलदार अंसारी है, वो 10 दिन पहले उससे शादी रचाता है और धर्म परिवर्तन करने के लिए वो दबाव देता है। वो धर्म परिवर्तन करने से अस्वीकार कर गई तो उसको पूरे परिवार के लोग मिल करके वो टुकड़े टुकड़े काट करके हत्या कर दिया जाता है। सभापति महोदय, 35 टुकड़ों में वो हत्या कर दिया जाता है और वो इतना शातिर है कि हत्या करने के बाद, घटना करने के बाद वो जो है पुलिस के पास वो गुमशुदगी का दर्ज कराने के लिए जाता है। जब वो टुकड़े टुकड़े करके बंद कमरे में उसको बोरे में बांध करके फेंका जाता है, जब 2-3 दिन के बाद जब कुत्ते उसको नोचने लगते हैं तब लोगों को पता चलता है और वहां पुलिस को खबर किया जाता है, तब यह शव का पता चल रहा है कि यहाँ पर हत्या करके फेंक दिया गया है। सभापति महोदय, उन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए का पूरा वर्चस्व है। वहाँ PFI ऐसे जो उग्रवादी संगठन के लोग हैं और एक समुदाय विशेष के लोगों को उन लोगों ने प्रोत्साहन करता है और ऐसे घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां कहीं ना कहीं वहां की सरकार ऐसे घटनाओं को रोकने से विफल रही है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर जो है ऐसे शादी करके आदिवासी जमीन को भी अपने कब्जे में लेकर के वो जमीन लूटने का भी काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि वहां की सरकार विफल रही है ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए वो कदम उठाए। यहाँ जो है PFI और जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए ऐसे लोग वहाँ पर निरंतर घटना घटा रहे हैं। सभापति महोदय, ये एक घटना नहीं है, ये पूरे झारखंड में चाहे तो दुमका का अंकिता को पेट्रोल छिड़क करके जो हत्या कर दिया जाता है, वही रांची के नरकुपी में जो है चान्हो के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटी है। सिमडेगा के अंदर जो है कोलीबिरा में एक मौलाना द्वारा तालीम देने के नाम पर वहां एक बच्ची को लगातार दुष्कर्म किया जाता है। सभापति महोदय,
ठीक है श्री जयंत चौधरी Sir, I would like to express solidarity with the Jawans battling the excursion, and we want to discuss China. Thank you. श्री वी शिवादर्शन Sir, here I am mentioning the issue of BEMEL. The BEMEL, the 750 days, the workers of the BEMEL is struggling. The people are struggling in house also. The people, the representative of the people, they are struggling here. So this struggle, the border issue will be discussed here. Entire issues of the people, common people will be discussed here, including the BEMEL. The people of the BEMEL, they are the last, their struggle is going on. The government should be protected there. Also the issues, the border issues and everything will be discussed here, sir. That is very important matter. So I am requesting. Mr. Nasir, So I am requesting, sir, Take your seat. the issues, border issues, direct and all issues. every will member be in the discussed well here. Some to issues, resume his or the her government is hiding some issues from And the this may be people. done. So I hiding request honorable the leader of the issues opposition will not be prevail upon his will not members. happen here. Take the seats. So, sir, Please take your sir, seats. The full fund discussion Please inside take the your house is seats. very necessary. The government Sir, is please not take your ready to seats. open the things Please in take front your of the seats. people. The Government should take your answer. seats. Government should answer the proper questions. Yes, of the take your people. seats, please. Otherwise, the struggle of the people Mr. you Nasir, will face everywhere take your in seat. the country. Hello, Sir, I hear you only sir, when your members we are take your seat. We are requesting to you. No, please should take your seat. Protect the interest of You have the to take your seat, representative sir. of the Executive people. should be accountable to the parliament. Executive should be According to the parliament. accountable to the parliament. Sir, so, Take your seats. sir, here, Please, no. I gave floor to 3 members to make their declared observations. Each of them departed. Which means the honorable members have no respect for law. You have given to me that you wish to speak. 1 second. Will you, house is not in order because you are in disorder. No. It is, I can indicate to you what you have done today. Each of you, by coming to the well, this will haunt you for ages. Trust me, this will haunt you for ages, and it will make you that the oath of, 1 second, please, the oath which you have taken on this solemn platform is being torn to pieces by you. You are experienced people. Many of you have parliamentary career that is illustrious, and you walk to the well. And what is more disturbing is that the leader of the opposition is unable to prevail upon his members, or the leader of opposition not hitting the chairman. Either way, it's not a good thing. At 1 o'clock, leader of the house and leader of the opposition will see me in my chamber. We'll continue with our work, please. At 1 o'clock. Miss Kavita Patidar. No, sir. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित। कविता पाटीदार। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत की इस पवित्र धरा पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया। इनका जीवन दर्शन हम सब के लिए आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में पथ प्रदर्शक है। Have you any idea what you are doing?
Have you any idea what you are doing? इनके नामों के द्वारा इनके कार्यों को सदियों तक याद रखा जा सके I'm surprised. एवं इनके सिद्धांतों इनके विचार I'm surprised. You should be conducting in this manner. Take your seat. इनके सिद्धांत इनके विचार No, no. आने वाली पीढ़ी को You don't have to decide. मार्गदर्शित करते रहे इस भावना के साथ I will कई consider. भवनों Take your seat, विश्वविद्यालय your मार्गों seat. का नामकरण You महापुरुषों can't के count नाम down से the किया chair like जाता है this. That's what you are doing. परंतु आजकल एक नई परंपरा का चलन देखने को मिल रहा है Depriving every जिससे member of निश्चित this house रूप of से his privileges. हमें ठीक करने की Too आवश्यकता serious है matter. माननीय Don't सभापति hold महोदय my बोल रहे हैं, hands. अच्छा नहीं लगता Please don't hold my hands. I am और ये परंपरा है I नामों को appeal to शॉर्ट you. फॉर्म में लिखने और पढ़ने I की appeal to you last जैसे time. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को डीएवीवी Go and take रानी your seat. दुर्गावती विश्वविद्यालय को You don't have to decide. Leave it to me. शहीद भीमा नायक कॉलेज Go to को your seat. एसपीएन कॉलेज रविंद्र All of you please take your seat. आरएनटी The मार्ग members have to resume their राम seat. मनोहर लोहिया अस्पताल को आरएमएल अस्पताल बोला जाता है महाराणा प्रताप नगर एमपी नगर हो गया तात्या टोपे नगर टीटी नगर हो गया विश्वंबर दास मार्ग Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please go to your seat. Honorable members. Honorable members, go to your seat. Sir, go. Let the members go to their seat first. Go to your seat. Go to your seat. Those members who are in the well are forcing me to take the extreme step. I appeal to the members, to leader of the opposition, not to force me to invoke the rule. And if I invoke the rule, honorable members, let me tell you, I normally don't revisit them. I have made every appeal in the House. Mr. Mukul Vasnik raised an issue why discussion is not being allowed. I am sure Mr. Mukul Vasnik is a senior member. I have indicated not a single notice in order. Every facet of Rule 267 violated. Take your seat back. Nasir, take your seat. Take your seat back. Take your seat. Forget about it. My ruling is binding. Please take your seat. I appeal once again to leader of the opposition. I appeal to leader of the opposition not to force my hands and invoke the rule. I will not allow this house to get into chaos. I will not allow this house to exhibit this conduct which is not permitted by rules. Ma'am, you have done enough. You will regret all your life, I can tell you. No one expects you. This is not done. Take your seat. Take your seat. Take your seat, ma'am. Take your seat. Ma'am, please take your seat. Take your seat. What's the take your seat? LOP will speak only after you take your seat. He will, but take your seat. All of you take your seat first. Go and take your seats. Take your seats. All of you go to your seats. Please go to your seats. Each of you, please occupy your respective seats. Please, back him. Please, occupy. Please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Ma'am, take your respective seat. Not this seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I once again appeal to you to take your respective seats. Take your seats.
Please take your seats, settle down on your seats. Settle down on your seats. Settle down on your seats. Settle down. Settle down. Settle down. Honorable Minister, settle down. Settle down. Settle down. Please, settle down. Settle down. Settle down. Settle down. Settle down. Settle down. Honorable members, I have given my ruling on Rule 267 today also. I had indicated that before giving the ruling, I had the benefit of going through each of the notices. I have carefully gone through the notices. Now, one second. I would give brief time to the leader of the opposition if he has to say something, but not on the merit of notices. You can indicate, but not on 267 which you have given, which I have declined. Please. Sir, Please, listen to him. sir, Please. thank you. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. सर, मुझे धन्यवाद देने से पहले ये भी ध्यान दीजिए कि मेरे पर आपके सदस्यों की कृपा रहे कि वो नियम माने. Have respect for him. Have respect for him. मैं Settle down. हम इधर के बैठिए. कोई सदस्य भी आप इधर के सदस्य कोई भी आपके विरोध में या आपको कोई एम्बेरस करना ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं. आप रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा. आप उतना एकदम गुस्से में आके गुस्से में नहीं आता मैं. नहीं खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं. सुनिए, मैं मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है. वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं. फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता है. बोलिए. तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हैं. सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं. ये सब कुर्सी पर होते मैं हैं. जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ. बोलिए. ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे. आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा है. सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं. और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ, उसके बारे में जो लीडर ने कहा, उसके बारे में हम चाहते हैं. और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं. ठीक है साहब, रूल तो है. मेरे को एक चीज बताइए. एक सेकंड खड़गे जी, एक सेकंड. हाँ, मैं यदि अगर आपको रूल नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? हाँ, और नहीं सर, आपको नहीं कहूंगा कि आप रूल की अवहेलना कर रहे हो, रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो. रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं. रूल 267 जो कहता है उसका कुछ भी मानेंगे नहीं. तो मेरे हाथ बांधते हो आप तो. नहीं सर, वो देखिए, आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं. लेकिन सर, हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है, वो भी सदन का ये काम है, आपका काम है. सिर्फ रूल बुक ही नहीं है, चंद प्रेसिडेंट्स लिखे नहीं जाते. तो आप कन्वेंशन आर देयर, तो वो कन्वेंशन के तहत हम उठा रहे हैं. लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है साहब, गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है. नहीं खड़गे जी, तो आप
खड़गे जी, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं थोड़ा हताश हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं। थोड़ी आप मेरे परेशान होने में की सुनिए जरूरत सुनिए नहीं। सुनिए सुनिए एक सेकंड। मैं परेशान हूं, हताश हूं, हैरान हूं। देश भर से लोग मेरे को कहते हैं कि आपने 267 की व्याख्या की, कभी कोई नोटिस 267 के अनुरूप आएगा, आप मानकर चलिए, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा। प्लीज 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 कंक्लूड। देश के सब देश की रक्षा, देश के रक्षा के लिए जब हम चर्चा चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई और रूल नहीं होता। रूल, सभी रूल आप निकाल दे सकते हैं, और इसीलिए हम बार बार आपको दिक्कत हो रही होंगी। हम हरासमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार अपनी बात रखने से आप जरा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं। नहीं, हैरान हो रहे हैं। हैरान हो रहा हूं। तो आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना, और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया। प्लीज, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं, और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ। आप हमको अलग मत कीजिए, वो पैट्रियट समझ के उनके तरफ मत देखिए, उससे भी ज्यादा पैट्रियट इधर। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार जो विषय उठा रहे हैं, इसके बारे में पहले भी उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे। साथ ही साथ माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। मैं समझता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद में बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए चाइनीज दूतावास
से मिला उसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है, जो देश की समस्याएं हमने विरासत में ली और अब समय आ गया। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेस, आप जब बुला रहे हैं कमरे में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं ये सब इधर बात करना है। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन है, आप बुला रहे, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करना, करने वाले प्रणब मुखर्जी जी। Sharad Pawar will say something on COVID. No. Shri Dr. Sikandar Kumar. डॉक्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की पांगी घाटी की सड़कों के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सड़कें पक्की व चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन पांगी घाटी में बीआरओ द्वारा खिरोट, लाहौल स्पीति, सुसाती नाला पांगी सड़क करीब 40 वर्ष पहले सिंगल लेन उबड़ खाबड़ बनाई गई थी, लेकिन आज दिन तक ना तो उसका विस्तारीकरण हुआ, ना ही उसे चौड़ा किया गया और ना ही उस सड़क को पक्का किया गया। बाया सात पास सड़क को भी बनाए हुए करीब 30 वर्ष हो चुके हैं। इस सड़क को भी ना तो पक्का किया गया और ना ही चौड़ा। घाटी को अन्य जिला अपने जिला से जोड़ने वाली सड़कों को पक्का व चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से इस ओर ध्यान दें व उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। सुश्री कविता पाटीदार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत के इस पवित्र धरा पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनका जीवन दर्शन हम सब के लिए आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में पथ प्रदर्शक है। इनके नामों के द्वारा इनके कार्यों को सदियों तक याद रखा जा सके और इनके सिद्धांत और उनके विचार आने वाली युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करते रहे, इस भावना के साथ कई भवनों, विश्वविद्यालय, मार्गों का नामकरण महापुरुषों के नाम से किया जाता है। परंतु आजकल एक नई परंपरा का चलन देखने को मिल रहा है, जिसे निश्चित रूप से हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और ये परंपरा है नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने और पढ़ने की। जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV हो गया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय RDVV, शहीद भीमा नायक कॉलेज को SBN कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग को RNT मार्ग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल को RML अस्पताल, महाराणा प्रताप नगर को MP नगर बोला जाता है, तो तात्या टोपे नगर को PT नगर बोला जाता है। विश्वंबर दास मार्ग को BD मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को DDU मार्ग, ऐसे कई देश भर में जिन महापुरुषों के नाम से नामकरण हुए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलने की परंपरा सी हो गई है। यहाँ तक कि हद जब हो जाती है, जब टैक्सी ड्राइवर और चालक से हम किसी जगह का पूर्ण नाम लेकर पता या स्थान के बारे में पूछते हैं, तो वो अनभिज्ञ रहता है, उसे पता नहीं होता है। और जब हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, तो वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। महोदय, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। लगातार हमारा बोलना कहीं न कहीं वो प्रचलन बन जाता है। महोदय, इस प्रचलन से नामकरण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है। नामों की प्रासंगिकता, पवित्रता ही खत्म हो गई है। ये सोचने का विषय है कि भावी पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। देश भर में ऐसे कई नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा वो पढ़ा जा रहा है। अतः महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन, सरकार और देश की जनता से यह विनम्र अनुरोध है कि महापुरुषों के नाम को पूरा लिखा व पढ़ा जाए,
ताकि मूल उद्देश्य को खत्म होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chairman, sir. This is an important issue I would like to bring to the notice of the government through you, sir. Regarding the pre-matric scholarships which have been discontinued for the minority and OBC students, sir. Education, as we know, sir, is the best leveler in the society. And the Delhi Declaration way back said primary and elementary education is the best investment India can make. As a step in that direction, for the last many decades, various steps have been taken to ensure that the weakest of the weak in the society and their children come and get educated. So as part of that issue, sir, various measures have been taken over a period of time. It is with a heavy heart I have to inform that in the midst of this academic year of 22-23, last month, the government issued a notice stating that the scholarships, the pre-matric scholarships for the OBC and minorities will be discontinued. Now we are all aware that the minorities and the OBCs, they are economically very weak. They need all types of support, including the financial support, which has been continuing. Giving them 1,000 to 5,000 rupees per student under various categories per year is not really a big burden for the government, but it's a big relief for these students coming from these poor sections, sir. It is an incentive for them to join school. It's an incentive to the families to send the children to the school. And it's also an incentive to the private schools to run the schools in one of the remotest areas where government is unable to reach. In a situation like this, without any consultation, if the government comes out and says the pre-matric scholarship will be discontinued, this year has left many, many millions and millions of students affected by this, sir. The government talks of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, but Sabke Saath, when these particular sections are eliminated from the scholarship, you will not be living a very good platform in the society for these people, sir. So I urge upon the government, kindly reconsider. Minorities are also a part of our society. The OBCs also are part of our society, and they are the weakest of the weak. So it is the bounden duty of the government, even though they have some more time, sir, 24 seconds left. May I continue, sir? Please. Yes. Sir, in this issue, I request the government to kindly consider. They say that we have come out with other schemes like midday schemes, midday meal schemes and other things. That's the reason we are cutting out this money. But kindly bear in mind that this amount goes a long way in strengthening the educational system and most important, bringing these minority and OBC students into the schools, sir. If they are not in the schools, it will create a major... Shri Vikramjit Sani. I request the government to kindly consider, sir. ऑनरेबल चेयर, मैं पहले देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 26 दिसंबर को जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी 6 और 9 साल की उम्र में जिनको जिंदा, प्लीज साइलेंस प्लीज सर, Please conclude. We are about to start question hour. Conclude. छोटे साहबजादों को जिंदा नीहों में चिन दिया गया, उसके लिए वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। हिंदी के एक कवि Question hour. गुप्त ने सर Question hour. Question 166. Shri Rajiv